सभी का स्वागत है आपके EduPrimeX चैनल में। इस कोर्स से हम सब सीखने वाले हैं कि ये जो नया कोर्स आया है, इस कोर्स से हम सीखेंगे AI के बारे में और AI के सब फील्ड्स के बारे में। इस फील्ड में बेसिकली इस कोर्स का एक टॉपिक ये है कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स के ऊपर ये कोर्स पूरा डेडिकेटेड कोर्स बनाएंगे हम सब। हर दिन एक वीडियो आप सभी के लिए हम सब लाने वाले हैं और हर दिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, कहाँ से AI रोबोटिक्स होता क्या है, उसके बारे में हिस्ट्री जानेंगे। इसके बाद सीखेंगे क्या क्या कंपोनेंट लगते हैं, अलग अलग तरह से हम सीखते जाएंगे डेली बेसिस पे इस रोबोटिक्स के कोर्स में आगे बढ़ेंगे और कौन कौन से सब फील्ड की आपको जरूरत पड़ेगी इसमें सीखने के लिए। लास्ट में क्या होगा जब ये कोर्स होगा, इसके बाद हम सब फॉर एग्जाम्पल रोबोट्स के कोर टॉपिक जैसे हो गया NLP, इसके बाद रेनफोर्स इंजीनियरिंग एंड विजन्स, बहुत सारे AI रिलेटेड टॉपिक्स है, ML हो गया, ये सब और भी कोर टॉपिक है, ये सब भी सीखेंगे जो कि आपको रोबोटिक्स से बहुत जरूरी पड़ेंगे। पहले हम ये सब जानेंगे रोबोट्स को जब आप डेवलप करते हैं तो सभी चीज़ में क्या क्या चीज़ की आपकी नीड। इस वीडियो में वो अभी का जो कुछ लेक्चर आपको चलने वाले हैं 30-40 लेक्चर आएंगे जो भी होंगे, उसमें आपको रोबोटिक्स के बारे में आप सब सीखेंगे अच्छी तरह से। डेली बेसिस सबको एक लेक्चर मिलेंगे अच्छी तरह से और इसके अगर नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको नोट्स भी मिल जाएगा और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आर्टिकल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन आप जाके डेफिनेटली देख लीजिए, आपको इससे रिलेटेड जो भी कोर्स होंगे। ये हमारा मैंने एक डे 100 चैलेंज एक्सेप्ट किया हूँ, तो डे 100 चैलेंज है ये कि आज का ये मेरा पहला डे 1 डे 100 डे चैलेंज जैसे ये पहला दिन का ये हमारा वीडियो है जिसमें कि ये कोर्स है ह्यूमनॉइड रोबोट। तो इस कोर्स में आप सब बेसिक ओवरव्यू दिए हैं कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स के बारे में, मतलब रोबोटिक्स एप्लीकेशन हिस्ट्रीज के बारे में जान रहे हैं, हम जानने वाले हैं बेसिक कोर्सेज में हिस्ट्रीज एप्लीकेशंस। बस इस वीडियो में हम सब जानने वाले हैं कि ओवरव्यू जान रहे हैं, 2 वीडियो तो ओवरव्यू हिस्ट्री ये सब जानने के इसके आगे बढ़ेंगे तो रोबोट्स को डेवलप करेंगे, क्या क्या कंपोनेंट बेसिक नीड्स क्या जरूरत है, क्या क्या चीज़ आपको सीखना होगा, वो सारे चीज़ हम सिखाने वाले इस कोर्स में बताऊँगा। कोर्स में बने रहिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कोर्स में आपको कहीं दिक्कत या कुछ आगे लगे कंटेंट लगा या कहीं इंप्रूव किया जा सकता है आप हमें बताइए, मैं इंप्रूव करने की अवश्य कोशिश करूँगा। ये मेरा वीडियो में कोशिश करूँगा, इसमें मैं वीडियो शूट किया था, ये मैं कोशिश करूँगा इंप्रूव करने के लिए। बताइए कमेंट करके कि कहाँ इंप्रूव करना है और बेटर करने की कोशिश में करूँगा। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो EduPrimeX को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और तेजी से AI का डिमांड बढ़ रहा है, आने वाला फ्यूचर AI है, रोबोटिक्स एंड ह्यूमनॉइड रोबोट्स है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा सभी को जो AI कंप्यूटर साइंस से जा रहे हैं, जो नहीं जा रहे हैं शेयर कीजिए क्योंकि रोबोटिक्स एक ऐसा फील्ड है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा फील्ड है जो कि हर फील्ड में ये जा सकता है, फाइनेंस हो, हेल्थ केयर हो, कंस्ट्रक्शन हो और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एवरी फील्ड सारी फील्ड में ये जा सकता है और ये काम कर सकता है। आपको नीड होगी, हर किसी को जरूरत है आज किसी में AI के रिलेटेड सीखना हो, रोबोटिक्स के बारे में जानना हो, रोबोट्स कैसे बनता है इसके बारे में अगर आप सीखोगे तो आप कुछ नॉलेज कर सकते हैं, पुलिस पे जा सकते हो। सीखिए, लर्न कीजिए, अभी कुछ नया सीखिए। इसी तरह अगर सीखने के लिए हम हमारे 100 डे चैलेंज पे आप भी हमारे साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। रतन कुमार 100 डे चैलेंज मैंने लिखी और इंस्टा पर पोस्ट किया, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, मेरा लिंक और इंस्टाग्राम आपको मिल जाएगा। और अगर डिस्कॉर्ड में जुड़ना है तो डिस्कॉर्ड में आपको रिसोर्सेज सब मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ इससे रिलेटेड या इससे रिलेटेड और कुछ कोर्सेज भी प्रोवाइड कराऊँगा। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस कोर्स की जर्नी हमारा पहला दिन था ये 100 डे चैलेंज का। आगे इसी तरह हम बढ़ेंगे और जाने की ह्यूमनॉइड रोबोट का कैसे हम डेवलप करेंगे, इंसान जैसा रोबोट क्या एथिक्स हो सकते हैं, क्या बायस हो सकते हैं, क्या हमें पॉलिसी बनानी चाहिए, पॉलिसी तक हम सब डिस्कस करेंगे, पॉलिसी कैसे बनाएं, क्या लॉ इन्फोर्समेंट गवर्नमेंट को रखनी चाहिए, क्या इसमें डेलीगेट करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या अथॉरिटी बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, किस तरह का अथॉरिटी वर्ल्ड वाइड बनाना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम आज की इसमें फेस हो रही है AI के रिलेटेड, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। पहली बात ये कि इसी तरह के AI से रिलेटेड, रोबोटिक्स से रिलेटेड आपको जो भी चीज़ आप जानना चाहते हैं, AI बहुत बड़ा फील्ड है। मैं अभी आपको AI से रिलेटेड बेसिक ओवरव्यू सब अलग अलग कोर्सेज के लिए दूँगा और ये तो हमारा कोर्स चलेगा, साथ ही कुछ AI के जितने भी सब फील्ड होते हैं बहुत सारे के बीच और बारे में बताऊँ क्या और करियर ऑप्शन एवरीथिंग। इसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया EduPrimeX चैनल को, मैं आपका इंस्टा रतन कुमार फॉलो भी कर लीजिएगा इंस्टा पे और यूट्यूब भी मैं आर्टिकल आपके बताऊँ आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं डिटेल में AI से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड। ओके, डांस पर एक बोलकर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और शेयर भी कर दिया दोस्तों को। इसी तरह लर्निंग करते रहिए, आप ग्रो करते रहिए, अपनी लाइफ में AI सीखिए। आज हम सभी करियर जा रहे हैं तो आप भी अगर सीखिएगा। Hello everyone, and we want to the welcome back to the EduPrimeX. Teach I'm your host Ratan Kumar. Today we are delivering that's into the incredible, fascinating, the cutting edges topics. We sharpening the way of living, the work and responsibility. As we navigate together with digital ages, robotics, embarkments, as with the power of houses, innovations, revolutionize industries. Access that the structures and the manufacturing that the healthcare and logistic entertainment and the robotics understanding. That today this video we are going to look back and the particularly we have the sub set of robotic that capturing the imaginations of worldwide, the humanoid robots.
Now, without we further ado, let me deriving the right to the executing, explore the robotics, discovering the capabilities, and remarkable humanoid robots shall be. Let me go to begin in these videos and to starts. Let me say that groundbreakings. The study, first of all, the groundbreaking understanding the extremely robotics. What is robotics? If you have to listen about the robotics, that is the robotics. First, my first segment, we are discussing about what is robotics. Can you know about the robotics? What is robotics? At the core of robotics, manufacturing displays the field of merging the mechanicals, engineerings, robotics, merging the field of mechanical engineering and electrical engineering and computer science and artificial intelligence AI. This subfield we have to the mix and it's to combine the to develop a field of robotics. This is the field of robotics. The ground this field of robotics is the multidisciplinary field. इस फील्ड में आपको आप सब हैव टू लर्न द डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स एंड डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट फील्ड्स टू अंडरस्टैंड फॉर एग्जांपल यू हैव टू लर्न द मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे हैव टू कंबाइन टू डेवलप एंड लर्न द रोबोटिक्स and there are the art of science. This field is the art of science, art of science, art of science in this field of art of science of design, art of science of designing, building and operations robots. Can you perform a task of automatically semi autonomously and visual now we talking about the component of robotics. We are about the systematically of technology coming out together. We imagine that the robotic is the puzzles. Robotics is just like a puzzles of you have to piece of uh, puzzles. For example, that you are there is a piece of puzzles. This is the gaps, and this gaps is to the fill of this puzzle. Then you have to fill to develop the puzzles. Okay, this is the field of the puzzles types of they have a field of robotics. Physics, the first of all we have to the mechanical engineering. We have to first discussing about mechanical. Discussing about the mechanicals. The physical body we have to structure the physical body
structures, physical body or robots, they have to need the learn of the mechanical engineering. This including the everyone can be to learn in this field of the joints, levers, wheels. It's field that you have to learn joint, limbs, and these limbs, and the wheels, gear. This have to the learn in this the field of mechanical engineering to determining how can the robotics to moves and interact with the environments. And next we discuss about the electrical engines. We learn about the electrical engine in this field. Which parameter and yeah, which fields learn about in the field of for example, you have to learn the electrical engineering. Why? The circuit of how to work the circuit works, and motors, architect, that to brings to robot to life. You have your to develop the life of the you provide the life your robot to you have to the learn about the circuits, motors, architect. There is the field of subfield of under the electronic field. You have to learn circuit motors and architect. You have learned in the field of electronics. Give you can robots to power to execute the task. You have to the power to robot to provide the power, execute task. To learn execute the task to learn this related, you have to learn in this field of the electronics. We like to never you can the muscles impulses used to move. The sensors, robot sensor, just we like eye, robot sensors, robot sensors is just like eye of robots, and ear, uh, or touch to help us or preserve world around us, around us preserve world around us through sensors. We allow to robot to gathering the information through the surroundings, the including the anything that we have to the determining the obstacles, measuring the temperatures. This is CS field to you have to learn the sensors of robots, uh, eyes, ears, touch has to the preserve the around the how can we preserve the worlds. So this have to the learn in the field of CS, and other we have to move forwards to AI, artificial intelligence. They have to robot to just to, and finally we have to the brain. We have to discuss about the your robots, humanoid robots brain.
brain behind the operations. AI means artificial intelligence, empowering the robots to make decisions. We have to provide the robot to decisions, and we have to the decisions learn to experiences. We have learned to experiences, and we expect to different we expect to different situations. How could we can handling the different by different situations we learned in this field of AI. It's to make to give them the virtual brain we have learned, and to process the information actual accordingly. Your according to how could we can brain to actually work in the this field. You have learned how could the brains AI robotics, how could robots to brain to actually work. You have to program the robots brains, then we have to brain to learn decision making, learn to experiences. We have to execute to different task experiences. How could we can learn to experiences through. Not we have to let to brings to concept of life, glamorous the incredible diversity of world of robotics. We have to the hope to industry robots, different types of the robots in this field industry, robot work robot. इसके बाद आ जाता है इंडस्ट्री रोबोट हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल. देन वी हैव टू द वर्किंग, we have this wait, you have to discuss the types of robot, and बाद में कर लेंगे discuss. First of all we have discuss the industry robots, working to treasury on assume the linear bulky products and precisions. This mechanical marvels. This is the mechanical marvel. जो बल्कि टास्क होता है जैसे भारी सामान को उठाना, या हैव टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यू हैव टू द गो थ्रू द हैवी वेटेज प्रोडक्ट टू दिस यूज फॉर द इंडस्ट्रियल रोबोट. There are the industrial robot is a marvels of the industry robots, has to the marvel of revolutionize manufacturing their industry efficiencies. Then we have to the service robots. First of all I will discuss about the industry robot, then we have discussed about the service robot. Service robots क्या होता है. Then they have provide the those to provide the services for hospitals and different industry basic services, restaurants. Service robots is like once you have to might to find of hospitals, hotels, uh, hospitals, hospitals, hotels, and then we are designed to assume the human developed to medicines uh, carry medicines, medicines and carry luggage every predictive information. इसके बाद then we discuss about the drone around from robotics. Drone around from robotics is the series through the skies, the arrivals for photography. This drone robot is used for photography,
and services, surveillances, surveillances, and even the delivery packages. Okay, I'll say that about in capturing the photography, surveillances, and delivery package. They have to the all the killing the jobs. I know, but we have to the another video another coming video we have discussing about the ethical consideration. Then we briefly how about the discuss about the which jobs we have AI can be killed and we have disturbed the job markets. Okay, this time we have to basic overview have to on these courses and AI robotics related. Drone. Drone will have to be killing the jobs of photography, surveillances, and delivery package. And then we have another benefit uh, for use of militaries of surveillances. Then another forward had been not to forget about the robotics used for explorations with deep sea. Deep sea is the experiment sending that deep sea डीप सी के अंदर हमसे कोई इंसान नहीं जा सकते, तो अगर करके नहीं जा सकते तो डेथ हो जाता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से हम उस जगह हम यूज कर सकते हैं वी हैव टू द यूजिंग द एआई रोबोट्स planets and robots to allow to wear have to the physically be and you have to the after few we have to listen about xenobot xino bot xenobot. You have to the now about the xenobot. Xenobot is just about a small piece of the boats to use of the medical purpose, medical industries researchers to develop the xenobots. Xenobots of work is to carry medicines, uh, your body के योर बॉडी इनर पार्ट्स ऑफ, जहाँ तक कि आपकी बॉडी की जीनोपोड्स का वो काम होता है कि जैसे भी हैव जहाँ तक कोई मेडिसिन नहीं पहुँच सकता, या अगर आपकी ब्रेन सीजन्स हो जाते हैं या खून जम जाते हैं तो कई कभार तो उससे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है बॉडी के अंदर, जहाँ तक मेडिसिन नहीं पहुँच पा रहा उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, उस जीनोपोड का हम यूज करके विल हैव टू have better treatment to help to use of the genobots mm, through the this is the revolutionized the industry of medical industry is the big revolutionized in the xenobots. Xenobot is a can you think about the xenobot is a living is non-living? uh, xenobot is living या non-living? You have to say about this is a robot is not a living, but you have to this point of times you have a wrong. Xenobot is a living beings. Xenobot is you have to, a on yourself to generate a multiple cells. Then you have to know about the your blood cells related. They have a blood cells. You have to two multiple blood cells to generate develops. For example, you had to learn about the codings and computer science to have to जैसे ट्री के बारे में आपने जो पढ़ा होगा तो ट्री के एक मेन ब्रांच होते हैं, तो मेन ब्रांच दैट वी हैव टू द थ्री सब ब्रांचेस दिस टाइप्स ऑफ work of the xenobots. One xenobots to extract another genome. Till then we have to extract another genomes, another genomes. This types of two compounding stage to then we have to develop the self-developed genome boards. This is one of the first living beings, human living beings robots.
of the developed by medical industry of the researchers. I'm not recalling this time of researchers scientist name. Then we have next video. I definitely name and all the basic, all the explain this genome boards that I'll be definitely explain. This is the definitely have to revolutionize of the medical purpose. You have to कई लोगों की इसके थ्रू जान बचाए जा सकते हैं जीनोम बोर्ड के थ्रू दिस द medical unremarkable innovations and revolutionize through the artificial intelligence. Today this video I have to this video is the close, so we have to the see the this robotics insights of just be about the one types of the robotics and specific functions, and that we entire the universe of innovations encompasses of remarkable range of designing applications. Now how can we establish the fundamental of robotics? It derives the deep into capitative realm of the humanoid robot. Get me ready to be amazing next video. Thank you for coming in this video. For end of this video, you have to subscribe and like and comment in this channels. Till the next time, you are watching this.